हेलो गाइस, सो वी आर बैक लाइव। आज उड़ना सीखते हैं। आज तो फाइनली सीखेंगे हम लोग। और अभी एक साइड क्वेस्ट कर लेते हैं छोटी सी जल्दी से। The Daedalian keys are back. Aren't they? पता है तो मेरे को। Why would I? Each key will, if ठीक है, ये वाला पता Perhaps था। I'll give it a sorry। go. मैं इसको वापस कर उससे मैंने स्पीड एंड में I hope you follow a कर few दिया। keys at least. If you manage to open a cabinet. भाई इस गेम का म्यूजिक क्या सही है। Levioso. आउट ऑफ 25 भाई कितना ऊपर है। भाई कितना ऊपर है भाई। दूसरे कोने में भेज रहा है क्या हॉगवर्ट्स के। ओह शिट सर निकोलस भाई इस गेम में भी है। एस्ट्रोनॉमी टावर ठीक है। आपकी धुंध क्यों है। A Daedalian key. I wonder where it might lead me. लेके जा रही है। Revelio. वो कहाँ गई। How nice to see you, my son. There's the cabinet. How do I get this key in there? चाटा दिया हमें। Well, that didn't work. अबे क्या किया है मैंने। देख चांटा। Well, that didn't work. Levioso. ये कुछ नहीं हो रहा यार। ऐसे कैसे यार। Accio. वो गई थी उसके आगे से गई थी यार। अच्छा वेट करना उसके आगे से कब जाएगी हैं। जा 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 जाना। डरे क्या। That's it. ओह थप्पड़। टाइमिंग होनी चाहिए। वो स्लिदरिन An का। old coin. Perhaps Nellie knows what it means. I've always said that travel broadens क्या सही थप्पड़ दिया उसको मैंने। Revelio. कुछ है क्या सीक्रेट्स में। सर निकला सलू। अरे जल्दी हट। मैं तो सोच रहा हूँ उसमें अवेडा का डावरा कैसे सीखे। क्या होगा जो हमें सीखना पड़ेगा। चलो बाहर। Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant. What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye वो out. तो यानी अपने रूम में जो वो थी कॉमन हाउस में I do hope you continue on. वो अनलॉक For हो so गई है much बे। effort, the prize must be something grand.
रुक रुक ये हाँ तो डायरेक्ट फास्ट ट्रैवल करेंगे बे हाउस चेस्ट है ना हाँ कॉमन रूम इजी भाई This seems I'll need to find more house. I should see this through and find the Slytherin house chest. अबे बहुत सारी रखनी है बे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये तो रुला देगा अबे कहाँ अटक कहाँ साइड से आना ये तो गंदा रुलाएगा यार अब मैं नीचे क्यों जा रहा हूँ यहाँ कोई साइड क्वेस्ट है क्या मेन क्वेस्ट का है देख के आते हैं Scope knows about the book you found. It's missing something. Scope does not believe it's safe to speak in open. Scope has left another note across the page among the circle of rocks. Take care. Okay. ये तो जैसे किसी ने देखा होता तो पता ही नहीं होता ओहो ये जगह भाई ये जगह भाई नेवल इसको और ये कुड़ी ग्राउंड पे भाई नेवल इस जगह को गंदा उड़ाता है भाई एंडिंग मूवी में अले Leviosa. Accio. जा तो जा जल के खाक हो जा कुछ होता ही नहीं भाई कतई हमारे उल्लू तो Off on another adventure, are we? यहाँ पे उसने क्या बोला था पत्थरों के बीच में है ओए Accio. उसके घूमता है almost there I had for the pumpkin just down from the stone circle look inside one of them ठीक है Pumpkins. Ah, I think I know just the place. ठीक है Accio. अच्छा पता है अपन को इसको लगा के चढ़ना था उसके ऊपर और भाई साहब मैं तो ऐसे चढ़ गया ऐसे स्पैम कर दिया मैंने तो Revelio. और कुछ है क्या आपके ऊपर नहीं फक छोड़ो पंकिन्स यार उड़ना सिखा दो यार क्या पैदल पैदल इधर उधर भागते रहते सर द पंकिन पैच ए भैंस की ये क्या कर रहा है ये क्या है Revelio. ये सारे के अंदर है ओह The young Slytherin must be exceptionally curious by now. Meets Scrope at the water's edge by the broken docks. Down to the water's edge. कितना This had better not be a trick. यार ऐसे वाओ यार ओड Accio. हाँ ये मर सकते क्या मर नहीं सकते शीश बच गया भाई पानी रास्ते रास्ते जाना चाहिए थोड़े 3 मिले 5 क्या बात है Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster. हाँ भाई खुद मत बता दियो खुद तो उनका चमचा है Happy to help, especially if you can shed light on the book.
Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. उसके नट स्क्रैच कर भाग साले डेडेवन. How do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honour her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. भाई मतलब का काम निकाल रहा है. ऐसे डेडेवन गेम तो बहुत प्यारा है वे. How did you know that I'd found a book and that it's missing pages? Scrope and the other house elves are good at staying out of sight. Scrope hears and sees many things in the castle. Scrope knows how to keep secrets. Tell me more about this treasured ring. Oh, it's adorned with the Black family crest. The headmaster would be pleased with Scrope for returning it. How did you injure your ear? The Blacks have a tradition of decapitating their house elves when their service is no longer required. One day, dear Apollonia was understandably frustrated with Scrope and got a bit too eager with a cleaver. Scrope was able to convince the sweet girl of his value and now views this small injury as a reminder of her good heart. भाई काट दी भाई लड़की. छी भाई गुड हार्ट कैसे? भाई कुछ भी डेडेवन कुछ भी. पैसे भी उतने ही है ना भाई. वर्थ इट है बट पैसे पता है बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि यार इतने पैसे खर्च हो गए भाई. ये बहुत बाप गेम है. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help and take this बट मेरा toast to पीसी the नहीं है यार grotto इसको just अल्ट्रा down पे the खेल coast लेगा. and place it on the pedestal there. Good luck. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your pages. टोस्ट क्यों दिया इसने मुझको? ऐसे भूख लग रही. चलो अबे यार पानी में तैर तैर के जाओ. Levioso. डेडेवन गायब हो गया दिखाऊं? अरे यार फिर गलत बटन. देखो देखो अच्छा ये तो ऐसे Incendio. Levioso. कुछ मिलेगा क्या इसको डिफीट करने से? भाई जीप मिली है भाई. ची ओके अपने पास अलग अलग टाइप के प्लांट है. Incendio. अरे नहीं आओ जगाना नहीं था. Levioso. अरे गायब हो जा रहे लड़के. इसको दिख रहा है मैं खाऊं. इसको दिख रहा है मैं खाऊं. चल चल. Levioso. हाँ क्यों से था ठीक है. अरे एक सेकंड रुक जा यार. मेरे को स्पेल तो डालने थे लड़ाई करने के लिए. नहीं नहीं Protego. वैसे तो हो ही नहीं रहा. देखो Stupefy. हाँ ये वन शॉट किल. Levioso. अरे यार मेरे बटन में अच्छा उस वाले को मारे ना. Protego. Stupefy. Levioso. Accio. Incendio. ये मेरे से ज़्यादा लेवल के बंदे हैं. मैं इनसे लड़ रहा हूँ पता नहीं क्यों. अरे यार एक और आ गया. Levioso. Incendio. ओ बच गया. Incendio. Levioso. भाई इतने मोटे जानवर है खींच भी नहीं रहे मेरी लो लेवल की वजह से. देखो वन शॉट. ये
भाई चला कौन सा बटन था? टैब। जा मार मार उसको मार। हाँ मार। कॉल क्या गायब हुआ रे? अरे यार वो एकदम इनविजिबिलिटी क्लोक नहीं है ना मेरे पास इस गेम में। वो स्पेल ऐसा है कि अगर आप किसी एनिमी के पास से निकलोगे ना तो वो आपको देख सकता है। ज़्यादा अच्छी इनविजिबल वो नहीं देगा। अरे यार फिर से गलत। बट है पता है एक्चुअली है इनविजिबल तो करता है थोड़ा बहुत। हैरी पॉटर तो देखिए ना ये देखो। हाँ ये प्रॉपर इनविजिबल नहीं है बट दूर से कोई देख नहीं पाएगा। और भाई मेरा फेवरेट स्पेल ह्यूमस इजी। लाइट जला के चलेंगे। आवाज़ भी सेम देता है हैरी पॉटर में जैसे दे रहा होता है। भाई यार पैदल भाई सेम स्पेल्स वैल्यू कर ले भाई। Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. टोस्ट नहीं चाहिए। वो खाएगा? What? भाई ये भी गजब है। Revelio. ओके चेस्ट पड़ी। चेस्ट तो मेन क्वेस्ट है। और क्या? Could it be? A visitor? Oh! Ah. Ooh. Ah. The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the भाई ये pages. मरवाएगा भाई। Forbidden Forest के नाम में Forbidden है पता है? Why did I need the toast to get in here? Oh, that was Apollonia's idea. Seems some squids love toast. They should have taught you that at Hogwarts. I think I could guess how you died, but who did it to you? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze. After that, I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. ठीक है। How is it possible to steal from Peeves? A poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's sure to cause the most chaos. He dropped them after a particularly aggressive romp through the library. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. भाई अभी तो वही मरा पड़ा है भाई ये बंदा लो। Revelio. भाई चोरी करने दो यार यहाँ पे चाहिए। ये क्या है? यहाँ पे बत्ती जलाओ। इसका स्क्रीनशॉट रखते हैं। काम आया। A map.
It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Where did you suggest we meet? Near the Forbidden Forest. Easy enough to find from the castle. I suppose if that... If you don't... सेम कौन वो चला देती, माफ करो माफ करो। अबे तैरना तेज भाई। अच्छा शिफ्ट नहीं दबाया क्या? भाई 5 घंटे का गेम प्ले हो चुका है मेरा, ठीक है। मेन मिशन नहीं है हालांकि, बट साइड क्वेस्ट करने बैठ गया था मैं इसकी। उसका तो कट गया यार, एल्फ का तो वो तो ऐसे कि भाई मेरे को मीर मास्टर के लिए रिंग चाहिए, वो तो बिक गई। अब ढूंढ ले जाके कौन खरीदा, चुरा ले वापस। Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollonia's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. Phew, that boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to House Elves. भाई ये ऐसे गायब होने का मुझे भी दो ना। Complete main quest, 4 out of 6। Revelio. Levioso. Lumos. इसकी इन्वेंट खोलने का हमेशा बोल देता हूँ, टी दबाना होता है। हाँ Accio. Lumos. अब भी नहीं हो रहा क्या? Incendio. ओह शेष I भाई, should investigate. सीक्रेट के ओपी। Revelio. चेस्ट है भाई, चेस्ट है। ठीक है, एक रोप मिली, बस एक रोप के लिए इतना। बस Revelio. चलो तो फिर ठीक है, मेरे क्या। देखता हूँ केप कितने अच्छे है। गियर केप वो बढ़ा रही है, बट मेरे पास ज़्यादा लेजेंडरीज है भाई। बट ऑफेंस बढ़ा रही है ना मेरे क्या। ऐसा है, इसकी अपीयरेंस अपन वही वाली रखेंगे, है ना। केप वो पहनेंगे, अपीयरेंस वो रखेंगे। कहाँ जाना है? You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. क्या बड़बड़ कर रहे हैं? Lumos. मारने का दो यार। अभी उधर क्या है? आपस में लड़ाई हो रही।
Here I am, as good as my... We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It took the cunning of a Slytherin to track down these pages. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. अबे क्या है As you can imagine, I never paid much attention in school. तभी तो Shall मरा we? हुआ है और हम जिंदा. हाँ भाई चलो. Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks. A stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. मगड़िया है यार. Bro. Lumos. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? जाऊं मैं जाऊं बकचोदी खत्म हो गई तेरी तो. उधर तो नहीं आ रहा. I've always said that travel... डेंजर ठीक है. डेंजर तो है. Nothing to do now but keep going. अपन स्टिक कर रहे पाथ को. ऐसे इधर उधर जाएंगे ही नहीं. भाई पूरा पेड़ सजा रखा है डेंजर 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 से. भाई फिर भी जा रहा है. बेशरम है क्या? The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Revelio. पैसा मिला पैसा मिला. Lumos. लूंगा सबको बे. A bridge. लेक पहले लेक आई है. ठीक है. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. Revelio. There it is. Just as Jackdaw described. Intramuros. Lumos. Incendio. Aren't you a little far from home? Ranrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. अरे भाई अटैक हो गया. इसकी भैंस की. Levioso. I'm a goblin, not a... Are you quite finished? Protego. Levioso. Embarrassing, isn't it? Incendio. हाँ ठीक है. Levioso. Really, it is. Incendio. Levioso. I won't rest until you're dead. Levioso. चल तेरी भैंस की. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. मछली आके पड़ी थी इसके अंदर. चलो देखते हैं. मेरा हीलिंग पोशंस खत्म हो गए भाई. करने पड़ेंगे. नहीं. ठीक है. Wonder how big this place is. भाई आई डोंट नो. अच्छा ये तो उठाने वाले हैं. Revelio.
Ancient magic aloo. These runes must have something to do with opening this door. I can shoot the symbol, but it doesn't stay lit for long. Okay. तीनों एक साथ शूट Light कर all देना. three before they time out on me. Oh, ancient magic. Where all this leads. Someone didn't want casual visitors down here. मेरे को जाना ही नहीं है. मेरे को जाना ही नहीं है भाई, मकड़ियाँ हैं. I wonder if any of my spells will help me through this. Revelio. लेफ्ट साइड ही बैठ गया. भाई कितनी मकड़ी. भाई डायरेक्ट उड़ के उधर चले जा भाई. ब्रूम स्टिक दे दो भाई. अच्छे से स्पेल्स यूज करना है, मारना है, ठीक है. Potato. Stupefy. Levioso. Stupefy. इतनी घिन आती है ना मकड़ियों से यार. क्या गंदा है. और भाई मकड़ी को छोटा करके पांव से कुचल रहा है भाई. क्या ओवर पावर्ड स्पेल था वो. Potato. Stupefy. पास जाना ही नहीं है, देखना ही नहीं है मकड़ियाँ दिखती कैसे हैं. Stupefy. Levioso. Accio. इतना साली जल के मर. Levioso. Stupefy. Accio. भाई नहीं जलती भाई. Stupefy. खेल लो तो आईडी सर का देना. अरे आप पास तो है ही, वैसे डर टेंशन की क्या बात है. बट कितनी घिनौनी है यार ये मकड़ियाँ. मेरे को नहीं खेलना है. इसलिए मैं फॉरबिडन फॉरेस्ट नहीं आना चाहता था. साले सपने आएंगे रात भर यार, सोया और नहीं जाएगा. Revelio. वो उधर चेस्ट रखी है, मेरे को उधर जाना है. बट 1 2 3 4 5 मकड़ियाँ उधर. भाई सुन, पहले स्पेल्स को अच्छी जगह रख लेता हूँ, वरना फिर भसड़ करता हूँ. 1 से उड़ाएगा, 2 से जलाएगा, 4 से अपने पास खींचेगा. ठीक है, इनफ स्पेल्स. और ये तो यही बैठी है. Incendio. मेरे को अंदर जाना ही नहीं है ब्रो. वो चेस्ट है. भगते अच्छा ये अंदर गई है सारी. भाई यही क्या चले बाहर. I'm not gonna touch those. Ugh. Potato. Stupefy. Stupefy. कौन दिया हूँ मैं. Incendio. Stupefy. Stupefy. Potato. Stupefy. Accio. Stupefy. Levioso. Potato. Stupefy. निरस्त्र भवा. फाइनली वे मकड़ियाँ मारी.
Incendio. भाई ये कहाँ डैन में आ गया हूँ मैं मकड़ियों के एक चेस्ट के लिए। तो देखना है क्या मिला मुझे। ठीक है और ड्रेस मिले +34 लेजेंडरी भी इक्विप नहीं यार बट दिख अच्छा नहीं रहा इसके दिख अपीयरेंस वही कर देता है ना पहले वाली अपीयरेंस पहले वाली कर देता है बट पहनेंगे लेजेंडरी गियर्स क्या बात है भाई सही क्या लकड़ियाँ कह रहा हूँ मकड़ियों से लड़के आपस में लड़ना मेरे को घर जाना है। अच्छा है कोई बड़ी सी मकड़ी नहीं दी इन लोगों ने ना रो देता है यार अच्छा लगता है क्या स्ट्रीमर रोते हुए Revelio. अब ये सब क्या सीक्रेट चीज है That platform ought to be able to float straight to me. Leviosa. Potato. Stupefy. अब बाप होता ठीक है Potato. Stupefy. Accio. Incendio. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Accio. मैं साइड में चीजें ढूंढने निकल लिया हूँ Revelio. ये सब तोड़ने का कोई मतलब नहीं है क्या An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. भाई चलो चीजें ही मिल गई Revelio. ये इतनी थी यार मेरे को अब कपड़े बेचने पड़ेंगे मेरा फिर स्लॉट फुल होने वाला है गियर में अब क्या गियर मिला है +26 ऑफेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ठीक है वो इस वाली से और बढ़ रहा है ये वाली पहनेंगे ना गोल्डन ये क्या है अपीयरेंस तो ऐसे चेंज कर सकते हैं अपन लोग इस गेम का अच्छा है आप कोई सा भी गियर पहन लो बट अगर आपको कोई अपीयरेंस अच्छे लग रहे हैं तो आप तो उसके अपीयरेंस रख सकते हो आप Another puzzle. Well, if Jackdaw could solve this, so can I. उल्ला सिम ओके सॉरी सीन थे उल्ला सिम Remarkable. भाई धीरे धीरे पूरा फुल बनेगा अब एक और खोलेंगे जिससे पूरा फुल सही भी होगा Revelio. पैसे मिले
चेस्ट लेके आएंगे यार, मिशन तो बाद में, पहले चेस्ट। हमको बस इसलिए फॉरबिडन फॉरेस्ट पसंद ही नहीं है। That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. जा आइए भाई इतना। It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. हाँ उधर मारता तो खत्म था ये। Accio. मिशन की तरफ जाएंगे ही नहीं हम लोग। रवीलो सर जी अलग से भैया कैसे हो? यार फिर से आ गई। Protego. Stupefy. Levioso. Stupefy. अक्षय एक मस्त स्पेल दिखाऊं क्या ये देखो। Stupefy. देखना देखना Stupefy. वो कैसे छोटा करके मारूंगा देखना। नहीं नहीं ये तो Levioso. हवा में और चल काल। भाई बहुत ज़्यादा डरावना है मेरे लिए मकड़ियों से भसड़ करना। Accio. Incendio. अच्छा वहाँ नहीं जा सकते, ठीक है। चेस के लिए मैं मकड़ियों से भसड़ करने आ रहा हूँ, क्या चीटिंग है ये। I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? अरे फुल केव एक्सप्लोरेशन है, अंधा वो भी। Accio. ये रुक पहले इधर ले। भाई कितनी चेस्ट है भाई, मेरा बैकपैक फुल हो जाना। पैसा मिला, ठीक है, बहुत सारा पैसा। और वीआर होता तो फिर क्या कर, मैं पास आउट हो जाता, पागल हो जाता भाई। वीआर होता तो खेलता ही नहीं भाई मैं ये गेम भाई, मकड़ियों से वीआर में नहीं। Sight. But I may as well help myself to this. Revelio. भाई कुछ भी चलेगा भाई, मकड़ियाँ क्यों? Accio. अरे रुक जा। आजा आजा आजा। भाई मैजिक का प्रयोग तो प्रॉपर है भाई, कितना भी कैसा भी करना। Accio. Your gear slot is full. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but Your there's gear no slot is sign of him. bro. बिना स्पाइडर के कोई भी मूवी कंप्लीट हुई है? हाँ ना, हैरी पॉटर में ये भी तो सीन है भाई। यार मेरे गियर स्लॉट फुल हो गए यार, ये क्या है? मैं बेच के पैसा कमाना चाहता हूँ इनको। 60 रुपए मिलेंगे, डिस्ट्रॉय करने पड़ रहे हैं। हाँ भाई डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय 2 डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, मेरे को 2 मिल जाने चाहिए। हाँ भाई क्या है? घटिया से ग्लासेस, ठीक ठाक ग्लासेस, ठीक है। Revelio. अच्छा
ये वैल्यू क्यों कर रहा हूँ? Accio. इधर का काम हो गया, कर लिया एक्सप्लोर। चलो वापस। वो चेस्ट पड़ी है भाई, कितनी चेस्ट है भाई, फुल पैसा। आहा, I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? अरे उसका क्या करेगा भाई, उसको मरने देना। There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders. These can't पर be. अरे अब तो शॉप से बाय कर ले कुछ, कल कह रहा था इतने पैसे नहीं है। हाँ ना, अब मैं, अरे द थिंग इज, यू नो बेस्ट थिंग अबाउट दिस गेम, मैं कोई सा भी इसमें से पहन सकता हूँ जो दिखता भी अच्छा नहीं है बट उसकी पावर अच्छी है ना, तो पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो है ना, ऐसे आप उसकी अपीयरेंस चेंज कर सकते हो। जैसे अभी मैंने क्लोक कुछ और पहना हुआ है बट दिख कुछ और रहा है, क्योंकि मैंने स्किन लगा रखी है बेसिकली। तो ये मस्त लगता है। ये तो मेरी छड़ी देखो, ये वाली लगाएंगे आप। हाँ भाई, मेरे को मिशन आ गया, परफॉर्म क्या कॉम्बो वॉम्बो, भैंस की आँख हट, मकड़ियाँ आ गई हैं बहुत सारी, अब फाइट करनी है। ठीक है, लेट्स गो। 10% चैलेंजेस कंप्लीट हुआ है। परफॉर्म Stupefy. Stupefy. Levioso. अरे भाई, जमीन में घुस गई। Stupefy. Accio. Protego. Levioso. Accio. चल बेटी कार, गिन आती है छोटा करके माँ। Protego. Levioso. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. आओ आओ आओ, हेल्प कर भाई, मेरी हेल्प कर। छोटा करके, अरे वो मैं अपना अल्टीमेट स्पेल यूज करता हूँ, वो कुछ भी करता है, या तो जला देता है बट छोटा कर देता है, वो उसके ऊपर है। वो टैब दबाना गेम रेज्यूम करते ही। भाई नहीं यार, नहीं नीचे से भाई, कौन भाई, मकड़ियाँ धरती के अंदर क्यों जा रही है? ये कौन सी पावर है मकड़ियों के पास? Levioso. Incendio. Levioso. Accio. Levioso. बहुत उड़ रही है। इधर आ, इधर आ, अब काम, इधर आ, चल पकौड़ी। और तू बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई है। How these spiders have multiplied since Jackdaw came this way.
लेवल अप बोलते भाई मत मकड़ियों से नहीं भाई। An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. हाँ भाई वो तो चौंट है। क्या टाइमिंग पे तीनों को देखो ब्रिज बनते हुए। आज नहीं अटक रहा ना। काजल एफएस गेमिंग हाय हेलो बड़ी कैसे हो? मेरे को आज नहीं अटक रहा है। सही है टच हो। चलो भाई Must be getting closer to Jackdaw's भाई remains आगे and और those बनने हैं फाइट। pages. चलो इनसे तो फाइट हो जाएगी, मकड़ियों से नहीं होती। We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? मैं पहले चुराऊंगा इस रूम के अंदर चीजें, ठीक है? वो लड़ाई ये देखो अल्टीमेट स्पेल अब फटा। Protego, stupefy. बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है तुम्हारा है। अरे वो लूटने दो रे, पहले लूटने दो भाई को। गैस स्लॉट फुल हो गया। आज ही बीटी देर, आज नहीं बीटी देर आ रहे हैं। थोड़े ग्राफिक कम कर लिया इसलिए बीटी नहीं दे रहा। हमें एक नया चश्मा मिला है, देखे तो कैसा मिला है। अरे तो बहुत कचरा। कल 14 का है ये पहनता है। इसको डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। और अब खोलता है बैकपैक। हाँ भाई क्या थी? ओ हेड में हाँ देखो ओपी फाइट करके दिखाऊं भाई। 1 से 2 निशाने अभी लोबे फाइट तो मैं करूँगा। आजा मेरे पास आ। हाँ तू खा। इजी बोलते। हाँ अब तुम 3 भी आओ, एक एक करके आओ। आजा आजा ये उड़ेंगे भी नहीं। हाँ ये उड़ेंगे भी नहीं और इनके अटैक से मैं बच भी नहीं सकता। चलो कल ठीक है। ये वैसे मेरे को एक चीज ट्राई करनी है। अरे स्पेल्स कहाँ होते हैं? स्पेल्स कहाँ होते हैं? इन्वेंटरी नहीं, टी दबा के। क्या मैं इनकी छड़ियाँ तो है नहीं इनके पास। अबे रिपेयर हो नहीं 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 रिपेयर हो नहीं। हाँ ये क्या मैं उसके हाथ। ओ चल बेटी छीन तो सकता हूँ। हाँ भैया आपस में लड़ रहे हो। देख इसका वेपन भी फेंकता हूँ। चल कल मारेगा। अपना वेपन खाता ठीक है तमीज से। अब वो चुराने का है क्या इधर? That's unnerving. What's happening? I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Where am I? Oh Hey, no, Bhagwan. the room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? ओ भाई एंशिएंट मैजिक यूज हो रहा भाई। The fuck?
can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? Can it be? Parcel sir, leave. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensieves. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? Yes sir. To see traces मेरे को of आती है, ancient मेरे को आती है, magic. ancient magic आती है. Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. के साथ आना है वापस. Fuck. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. ठीक है. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Your connection to ancient magic has unlocked talents. You will receive 1 talent point each time you increase your visiting level. You have talent points to spend in the menu. ठीक है. Finally एक नई चीज unlock हुई. 10 talent point है. So किधर डालूं मैं? This talent improve your overall effectiveness. ठीक है. अच्छा ये लेवल 5 है. ठीक है, ये ठीक है. Woohoo! Holding down dodge allows you to vanish quickly. ये तो चाहिए. ठीक है, ये तो चाहिए. ठीक है, ये भी चाहिए. अब दूसरे उसमें देखते हैं. स्पेल्स बेस स्पेल एक्वायर टैलेंट. ठीक है, वो एक साथ 3 लोगों को खींच सकता है, एक साथ 3 लोगों को उड़ा सकता. नहीं नहीं, ये अभी नहीं चाहिए. डार्क आर्ट्स में क्या है? भाई इतना सब कुछ है यार. स्टाइल्स में क्या क्या कर सकता हूँ?
रिक्वायरमेंट। नहीं 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 स्टार्ट इवेंट कोर मैजिक में, कोर मैजिक की जरूरत तो है। डार्क आर्ट ही भर लिया मैंने तो। ओके अब मैं है ना, मैं स्टेल्थ को तो ले ले, मैंने 1-2 लिया स्टेल्थ का। अब मैं पता क्या कर सकता हूँ, अब मैं अपने फॉर्म बना सकता हूँ। अब देखो जैसे अगर मैं डेली ऐसे नॉर्मली घूम रहा हूँ तो एक नहीं स्टेल्थ है ये तो, एक तो ये हो गया, एक हीलिंग का हो गया, एक उड़ने का हो गया और एक खींचने का हो गया। ये मैं डेली लाइफ में यूज़ करूँगा। फाइटिंग के टाइम उड़ाना, जलाना, खींचना और उनको वो ले लेना, उनसे वेपन ले लेना। ठीक है ये हो गया। बस इन दो के बीच में स्विच करते रहना है मुझे। और स्टेल्थ मोड का भी एक बना लेता हूँ, ये स्टेल्थ में काम आता है, लुमिनस काम आता है, ये काम आता है, ये काम आता है। ठीक है हो गए बाकी सारे तो सीख ही गए हैं अभी। अवार्ड अकाडावरा किल्स एनिमी इंस्टेंटली, व्हाट द फक। मजा आएगा अगर ये सीख लिया तो। बट हाँ ठीक है, स्टेल्थ मैंने लिया है, कोई तो स्टेल्थ लिया है मैंने। फाइनली भाई चालू हो रही है चीजें। pages and the map chamber. Why would I need the book? पता नहीं भाई, चाहिए होगी बुक। वापस चुराने जाएंगे क्या बुक? नहीं बुक तो चुराई ली थी। I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Expelliarmus! कहाँ गई रे चाबी? हाँ चल आजा, चाबी का गेम खेलेंगे। देखना थप्पड़ मारेंगे चाबी को। हाँ निकल, की के आगे से निकलना। To learn Depulsor, the banishing charm, useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my नए classroom. स्पेल्स सिखा रहे हैं बे, टीचर्स नए स्पेल सिखा रहे हैं। तो नए स्पेल्स के लिए क्या करना है का, स्लिदरिन कॉमन रूम जाएंगे पहले। Another house token for the house chest. भाई बहुत सारे इकट्ठे करने हैं अभी तो। अब है मिशंस, देखते हैं पहले। मैप क्या खोल लिया, क्वेस्ट फ्लाइंग क्लास फाइनली भाई, फक एवरीथिंग। हम जा रहे हैं फ्लाइंग क्लास लेने, ठीक है। ये सब क्या है? अरे हाँ ठीक है यार, इनकी इन्वेंटरी के आसपास गियर में क्या मिला था नया? अच्छा लेवल 15 पे खोल सकता हूँ मैं, ठीक है पहन सकता हूँ उसे। ऐसा लगा अच्छा लग रहा है क्या कैरेक्टर, या वही टोपी अच्छी थी इसकी? टोपी पे करे ना। देखो टैलेंट्स तो अब आप खरीद सकते, जैसे लेवल अप होते रहेंगे ना। स्टेल्थ में मैंने एक लिया है, एक रह रहा था, इसकी ज़्यादा जरूरत आएगी इसलिए मैंने लिया नहीं। भाई फाइनली वो कह रहा है कि भाई उड़ने आ जा। अच्छा।
अब अटकेगा गेम, अब तो कैडा ही अटकेगा। रात हो रही है भाई, देख रहे हो रात हो जाती है ना तो स्टूडेंट्स होते ही नहीं है हमारे ना, कितने स्टूडेंट मिलते हैं घूमते फिरते। भाई चाबी थी क्या यहाँ पे कोई? हाँ भाई, हाँ चल 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 चल। कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? अरे कहाँ जा रही? ये चाबी, अबे यार चाबी खो गई। By Merlin, I will no sooner tolerate indolence, insolence, neither makes for a night worthy of esteem. अबे चाबी कहाँ गई यार, चाबी चाहिए। तो मैं ऐसे चलते फिरते साइड क्वेस्ट हो जाएगी तो अच्छा तो है। अबे कहाँ गई चाबी? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, ठीक है। अबे ये रहा। तो एक फनी चीज दिखाऊं? अरे यार हट जा। देखो अगर मैं पहले ही थप्पड़ मार दूं ना तो ऐसे, ये चाबी का क्या खेल है बेसिकली, ये ऐसे हमें यहाँ चीज़ें अनलॉक करना है और अपने को एक ट्रेजर मिलेगा। तो ऐसी 16 चीज़ें चाहिए, 2 ले लिया। और अब हमें वेट करना है चाबी इस लॉक के आगे से देगी और हम थप्पड़ देंगे चाबी पे। तो देखो इसलिए दिन इनका वो मिल रहा है, तो हमें हाउस टोकन मिलेगा बेसिकली। इसलिए मैं घूमते घूमते अगर कहीं चाबी मिल जाए तो अपने क्या रात हो गई तो एक भी स्टूडेंट नहीं है बाहर, सब सो रहे हैं आराम से चिल। भाई ये तो मस्त है भाई, डे नाइट सर्कल। ये फिर चाबी की आवाज है क्या? हाँ ये चाबी बड़ी बड़ी चाबियाँ मिली अभी। हाँ कहाँ लेके जाएगा? चल 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 चल। हाँ इधर नीचे राइट साइड, बस लगाया था। अरे ये सैटिस्फाइंग लगता है ना ऐसे थप्पड़ मार देना बिना मतलब इसको। जाना उसके आगे से। अरे यार ये दोनों बहुत बकचोद है। ये दोनों भाई एक बार पता है क्या किया, जैसे अभी इसने थप्पड़ मारा ना, एक बार ये उठा अपना वेपन लिया उसको तोड़ दिया भाई दूसरे वाले। भाई यार कुछ भी हरकतें करते हैं यार ये दोनों। अब इतनी रात में तो फ्लाइंग क्लास होती भी है, सुबह तक का वेट करवाएगा, लिखा आएगा वेट करो, देखना पक्का। वेट देखा, वेट लिखा है। ये सुबह हो गई, सुबह हो गई फाइनली। अब अटकेगा भाई, गंदा अटकेगा। Everybody grab a broom and we shall get started. मैडम कहाँ से बोल ली? Mr. Clopton, your attention please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. ये दूसरा बंदा The एकदम goal मेरे of जैसे today दिख is रहा to है। remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone Yes, kept up with their practice over the summer holidays. हाँ ना For fine। those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. अब करो बे। Up! Thank you. Now, your turn. Up, you stupid ratty school broom. अपना कैरेक्टर बोलेगा आप? Up. वो बोला एक बार में। One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. भाई डर तो लग रहा है, डर तो लग रहा है। And
And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do कितना satisfying है. property. I want them returned in one piece. I think I'm getting the hang of this. भाई कितना satisfying है. ये तो बहुत धीरे है. अभी तो भागेंगे. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with the more advanced exercise, shall we? ठीक है. This next set of rings will take you around the grounds अरे for more of a challenge. क्या है? Toggle flight speed, descent, ascent. ठीक है. What a view! Hello. Nice day for a flight. Ha! Good. I've got this. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as the first year. पता है इसमें अपन को है ना वो करना पड़ेगा, ब्रूम को अपग्रेड करना पड़ेगा ताकि और तेज उड़े और ऊंची उड़े. भाई बहुत प्यारा. ओ भाई क्या लग रहा. Whoa. Our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Made it! Oh, did anyone else see that? Oh, well done. Have a moment? ठीक है वो मोमेंट. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Slytherin like you might be interested in making an escape from class? Kagawa seems strict. I wouldn't want to get into trouble. Kagawa won't even notice. Besides, a bird doesn't learn how to fly by staying in the nest. बात तो सही है. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? अबे कहाँ जाना चाहता Ahead है? of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. क्या? Burst speed. Ah, yeah! Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Let's hurry back. क्या उसके रूम ज़्यादा अच्छी है, वो वहाँ पे ही उड़ के जा रहा है. Looks like we've already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. Finally. And where have you two been? Ah, Dalia. Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. पर मैं मना किया था, ठीक है?
Chin up. That was some rather good fly. तारीफ कर दी इसमें भी वो आएगी क्या bird. Actually आप तो बस गेम देखते रहो. Sorry about that business with Kagawa. But you have to admit, those views were worth it. हाँ भाई, views तो worth it थे. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then? If you can, you should. Wish I could. Hi. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Story तो complete करनी होगी. किस चीज का मन? If I could afford the new Bright Spark broom at Spintwitches, I'd be on it now. Spintwitches is opened in Hogsmeade. All the latest brooms I hear. ठीक है. That's that. I need one. The broom I have at home. Madam Kagawa, about what happened in class. No need to discuss it further. Losing points for Slytherin should serve as a deterrent against future escapades. ऐसे मत करो यार मैडम यार. Professor Weasley has asked that I teach you a few additional spells, so please keep an eye out for an owl from me. You're also welcome to drop by any time with questions. मैडम I've sorry not ना यार forgotten मैडम. about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts अलग-अलग classroom. लोग सिखाने के लिए I know a तैयार discreet हैं. place near there. ठीक है. As that. Good day to you. I require assistance with a delivery and thought you might be interested. Please visit me at J. Pippin's Potions if you'd like to earn a few coins. ठीक है. आप पहले है ना. Meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. भाई I have an अंडे idea of मिलियंस. somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. Hogsmeade का है Hogsmeade. अपन को खरीदनी ब्रूम ठीक है. ब्रूम के लिए कहा था. The 3 broomsticks इधर जाए. तो ओलिवेंडर्स है. चलो इधर जाते हैं ना. क्या है? पैसे की जरूरत पड़ जाएगी यार पहले. अरे तो खेल रहा था ना मैंने नहीं बोला था हवा में उड़ने को. अच्छा हाँ वो अच्छा हाँ मैंने अरे. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Hogsmeade भाई. चलो भाई काश इतने पैसे बचा रखते हो कि बेस्ट रूम आए तो पॉसिबल नहीं है बट क्या पता बेस्ट रूम आ जाए. ए बिल्ली हेलो करके जाना चाहिए जानवर को. बड़ा प्यार आ रहा. तू उड़ेगी क्या तू भी? इसको उड़ा सकता है. ये इधर आइए. नहीं नीचे ही गिरा दिया. We took the goblins once. Now what will they? Ah, new face. Wonderful. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. What are we looking for today? हाँ कि मेरे पास 1800 है और ये है 600 की. ओके लिखा है कंफर्टेबल स्पीडी ब्रूम विद यूनिक वुडन डिजाइन. परफेक्ट ब्रूम फॉर दोज विद फियरी टेम्परामेंट. एक सेकंड देना गाइस. कौन आ गया?
घंटे बजा के चले गए भाई। ये तो सारी 600 की हैं। ठीक है फिर टाइम ओके। एम्बर डैश ब्रूम यानी ये तो तेज भागेगी। अब ब्रूम एन्चेंटेड टू ठीक है। फाइनल आफ्टर इट फ्रॉम एज द ब्रूम इज बिट फॉर स्टेबिलिटी। भाड़ में जाए स्टाइलिश ब्रूम विद लाइट टच क्वाइटली ठीक है। That item is of the highest quality. ओह भाई साहब ये तो तहलका मचा देंगी। ये भी ठीक है। That item is of the highest quality. ठीक है। हाँ ये क्या है? कौन सी ले? ये देखो फर्स्ट वाली है लास्ट वाली बताओ। अरे यार समझ ही नहीं आ रहा। ये ले लेते हैं। स्पीड तो होगी। You'll be thrilled with that broom, I promise you. कुछ खरीदेगा क्या? Nice doing business with you. Thanks for stopping by. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? ठीक है. That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Ray. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Hogsmeade and certain other area private flying. ये क्या चीज़ है? Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. और यहाँ पे एक और क्या थी? Three broomsticks. We've got dark wizards these days that think more ये talk about you taking down. अच्छा तो खाने पीने का है ना उधर साइड मिशन चालू करें या मेन करें अब समझ नहीं आ रहा नहीं मेन करते हैं हमें वो हॉगवर्ट्स उड़ के जाना है Here I come. Okay, press tab then tab 3 to equip your broom tool. Ah, ये भाई साहब ग्राफिक्स भाई गेम बना वैसे मैंने क्या क्या लिया था सेटिंग्स
क्वेस्ट क्या क्या है भाई? अंधी क्वेस्ट है। अनअवेलेबल, ये भी अवेलेबल करवाते पहले। If it isn't Slytherin's newest broom talent. Hello, Imelda. Albie Week sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. Seems someone's jealous of my skills on a broom. Me? Slytherin Quidditch captain. Jealous of you? Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. I can't be having that. Perhaps I am competition. You can't be what passes for Slytherin these days. Ragged old hat's dropping its standards. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Slytherin. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. भाई उसकी रूम अच्छी हुई तो लग जाएंगे, ठीक है? बाकी let's go. This is rather fun. Oh! Oh! अरे भिड़ना नहीं। Success. Brilliant. Made it. Brilliant. हाँ भाई। That wasn't too bad. भाई बहुत भयंकर कैड़ा आ रहा है अभी उसको तो। ये बज रही थी ज्यादा ही। हम क्विडिच कैप्टन हूँ, तुम इससे लो। पता चल गया कौन प्रो है? आइए जरा। That's not. You must have cheated. Fine, you won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. ओ भाई साहब हरा दिया। Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up.
The next course near Irondale offers a much tougher challenge. ठीक है. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke, whilst on an errand for Albie Weeks. There you are. The Cross Wands duelist to beat. Okay. अबे मैं second number पे Mr. हूँ. Weeks will be glad to hear how I fared. Oh sheesh. ठीक है. रूबी वेल को हराना है. उसका 1 मिनट 32 सेकंड है. स्टार्ट रेस आ जा. तो भैंस की इस बार ढंग से. Did it? वो तो बहुत ही आगे है. बेस्ट टाइम वाले ने पता क्या किया? एक भी ये मिस नहीं किया है. ये गोला मैं तो अंधे मिस कर दिया था बीच में. Made it. Brilliant. एक मिनट 32 सेकंड हो गया यार. चलो पहले से ज्यादा है मेरा. This is rather fun. भाई रीस्टार्ट करना है मेरे को. यानी मुझे फर्स्ट आना पड़ेगा है. बस तो आके रहूं. ए चलो लास्ट है. अगर इसमें फर्स्ट नहीं आता फिर कभी नहीं आता. This is rather fun. हाँ भाई उसकी तेज है. ब्रो तो स्टार्टिंग में मेरे आगे थी. वो गेम स्टार्ट होते ही मेरे से आगे थी. Now that's more like it. कितना क्लोज हूँ मैं उसके यार. अरे यार शीश. 1 सेकंड से हार गया. कोई बात नहीं. नाश्ता Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade.
With something to report, I hope? Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Ray's must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent, and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. Why would anyone doubt your ability to upgrade brooms? Oh, you'd be surprised. People get set in their ways, worry that fiddling with what's working fine will somehow ruin it. Those people don't appreciate the sense of freedom that comes with quality broom flight, nor do they appreciate all that's involved in the creative process. I have a friend in Rome runs a shop like mine, says it's worse there. Of course, they do nap in the afternoons from what I hear. And where would we be without enhancements? I mean, if Elliot Smethwick had let the naysayers get to him, we would never have had the cushioning charm. I don't listen to them. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. How to address the issue of altitude as it relates to speed? महज इसकी शॉप से पैसे चुरा रहा हूँ। हॉगवर्ट्स के अंदर उड़ाने देंगे क्या? मजा आ जाएगा हॉगवर्ट्स के अंदर उड़ा रहे होंगे तो। Expelliarmus! नहीं अलाउड नहीं You can't imagine how inconvenient. Over here. हाँ भाई बोल. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribbler tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. भाई चाबी है भाई रुक जाएगा भाई यहाँ कहीं चाबी है अरे यार चाबी की आवाज आ रही है There's a secret passage just here. It's well disguised. उसने तो बताया नहीं स्पेल हमको हमने खुद ही कर दिया चीटिंग नहीं How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her. ये क्वेश्चन मार्क चीज कैसे मिली है Extraordinary, what the fuck? ठीक है रूम ऑफ रिक्वायरमेंट लेके जाना है इसको तब क्वालिटी भाई फाउंड लेजेंडरी स्विंग एक सेकंड आया
क्या गेम खत्म होने को आ गया क्या? लेजेंडरी चल रहा है भाई, मेरे को डर लग रहा है। नहीं भाई बता रूम ऑफ रिक्वायरमेंट नहीं खोला, ऐसे कैसे कंप्लीट होगा? I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I know Ominous. Met him in our common room. I've noticed he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Of course. Ominous spoke to me about his family when we first met. To say that he has no love lost for them is an understatement. Glad you understand. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Confringo. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Best to keep... Tact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther. Confringo! Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. That's it! I think I've got it. Well done. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too.
Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key that... A port key? To Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of this secret undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Revelio. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello, Ominous. I was just heading to our common room. I've recognized that voice. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. मेरे को भी अंदर ले बे मेरे को देखना है सेबेस्टियन को मर रहा हो भाई बेचारे के लग गए हाँ भाई कहाँ चाबी How nice to see you, my young friend. Excellent. चलो एक और मिला Revelio.
अभी किसके मिशन पे जाएं? पहले स्लिदरिन कॉमन रूम चल पे यार। ये क्या ये नहीं I almost bought an owl in Diagon Alley. Went with a cat instead. Odd-coloured eye and quite appealed to me. Why would anyone bother sending secret love? I want to win me over. Professor Weasley? तो सोच फोटो में से निकल के आया मजा आ जाए। Somewhere away from prying eyes. भाई रूम ऑफ रिक्वायरमेंट मिल जाएगा मेरे को ऐसा फील आ रहा है। हाँ ये हाँ मिल गया भाई लिजिट रूम ऑफ रिक्वायरमेंट मिला है क्या? हाँ ऐसे बोला था। Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. भाई तो अलग ही अंधी जगह है। What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. ठीक है। ओ भाई ये तो ठीक है। क्लिक हमारे स्पेस से चालू है। क्लिक स्पेस एंड क्लिक आया मैंने इसको यहाँ दिख रहा है क्या? Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Moonstone है कब से ग्राइंड कर रहा हूँ मैं? हाँ भाई कुछ काम आ गया था। Where in Merlin's name is that elf? Revelio. Accio. Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. Can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this.
give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Revelio. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. हाँ भाई रेस्ट ही करते रहो. ओ भाई चेस्ट ही चेस्ट है. तो बाहर आ. Accio. Levioso. Revelio. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! Look on. No, not Cal. that. That's not helpful, you worthless pile of tin. ठीक है भाई. Accio. कटिंग कर दे भाई. यार अब इतना ऊपर कैसे जाऊँ? Bit offended the room thought I need a but easy thing. Revelio. वो कहाँ है? ऊपर जाना है यार मैं. वो कैसे जाए? फ्लाइंग अलाउड है नहीं. अभी मैं खुद तो नहीं खो गया रूम ऑफ रिक्वायरमेंट के नाम के. Accio. ठीक है तू जरा चाय पी ले. Accio. आजा आजा आजा. अबे इस पे ऐसे चढ़ा जा सकता है. नहीं चढ़ा जा सकता. Levioso. बस चलो अपना काम हो गया. Accio. Revelio. अबे यार वो उधर ही चला गया वापस. ठीक है. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? What was that? Was that a golden snitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Accio. Revelio. उधर कैसे जाऊँ? Incendio. Reparo. Accio. Reparo. Accio. Okay, got it. Are you? तो वापस अंदर आइए. Levioso.
अबे हो तो गया था कितना सही से उधर कैसे जाऊं Levioso. The fuck? कोई स्पेल भी याद नहीं आ रहा जिससे ऐसे जा सकूं कोई स्पेल है क्या मेरे पास लगाने का जरूर आग लगाने का जरूर है Levioso. छोड़ो भाई नहीं जा सकते Revelio. I hope that house elf can find us in here. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deeg will come to you. Hello. Ah, Deeg, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deeg was looking through some of what's appeared in the room since Deeg was last here. Is this the student? Indeed it is. Deeg is honored to meet you. Deeg has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deeg. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deeg, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deep-seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Oh my God, क्या सही लग रहा है. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description.
Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. ठीक है. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk. ठीक है मेरे को एक चीज़ तो मिली थी जो अनआइडेंटिफाइड थी. चलो लेजेंडरी ग्लव्स ज़्यादा अच्छे हैं. ठीक है. अरे कहाँ गई? ये थी ना. अबे इसमें एंशिएंट मैजिक का वो लगा हुआ है. व्हाट द हेल. ऑफेंस एक ही तो गिर रहा है. क्या दिक्कत है? टैलेंट्स. ऊपर जाना चाहता है. बिल्कुल ही चेंज हो गया. आना. आइए. ठीक है मैडम, और बताओ. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Easy, bhai. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. ठीक है, आप खुद का फाइनली बना सकते हैं. न्यू स्पेल अनलॉक्ड. कहाँ है भाई? कौन सा? ये रहा. Reparo. अबे रिपेयरो क्या है? कंजर अप पोटिंग टेबल ही है क्या? ओ भाई क्या अलग अलग टाइप के हैं. स्मॉल सैंडविच, स्मॉल. भाई अलग अलग टाइप के हैं. कौन सी ज़्यादा अच्छी लगे? अच्छी है. अबे कलर भी चेंज. अरे शीश.
ठीक है, एक तो टेबल लग दी और ये अपन इधर रखते हैं। रूम डेकोरेटर बन रहे हो क्या? और नहीं तो क्या भाई, सेम है। भाई फ्रंट कहाँ है इसका? ये है ना फ्रंट? अभी दोनों फ्रंट जैसे ही लग रहे हैं। ये फ्रंट है, ठीक है। कलर बताओ भैया अच्छे अच्छे। भाई क्या सही है। ओ ये अच्छा। Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. ओ भाई क्या प्यारा लग रहा है। कहाँ रखे? चेयर तो है नहीं, पहले वो बना लें। कुछ भी कोई अंधा सामान है मेरे पास। अच्छा चेयर्स लॉक्ड है। डेस्क ऑफ डिस्क्रिप्शन पहले से है। अंडू कैसे करना है? कलर वाला नहीं है क्या? और क्या बच्चा क्या ला सकते? मैं अंधी चीजें अनलॉक कर सकते हैं अब तो। Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. Can you tell me a bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deke has had a good deal of experience. both on Hogwarts and the previous post. I'm not good I shall decorator, let okay? Deke tell you more when he's ready. But again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Okay, जरूर सुनेंगे. Thank you, Professor. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. भाई साहब ये तो जबरदस्ती यहाँ रखा है। चटक कैसा हटाना है अब इसको? हाँ कंजर करना है ना। अंधा सामान है बे। कारपेट वारपेट आ गए, टेबल्स आ गई, चेयर आ गई।
भाई क्या डेकोरेशन सिमुलेटर चलेगा अब तो। प्रोफेसर मूव कैसे I'm करते ready हैं? for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the room of requirement. Return to me once you've gathered enough. ठीक है, enough gathered है। I have the moonstone you request. Good. अच्छा sorry use नहीं Then we करे। may begin your lesson. कोई नहीं internet You can design conjure job मिल more जाएगी। than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? अब भी तो करें यार। Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. ठीक है मैडम, अब भी आएंगे हम। Wingardium Leviosa. Big things. You should be proud of all the potions you've brewed. Deke hasn't seen this many plants here before. बड़ा कर पैस क्या और बड़ा कर कैसे रखते हैं? ज़्यादा बड़ा हो गया। अरे यार पर वो रूम है तो वहाँ से आ रहे है ना, तो हम इधर रखेंगे क्यों गंदे पाँव लेके नहीं आया ताकि कोई। एक हुआ ठीक है। अरे बड़े सही, बड़ा सही था यार। वो बीच में गोल टेबल और चारों तरफ ऐसे ये रख दूं, क्या मस्त लगेगा। अच्छी लाल वाली अच्छी लग रही है ना। हाँ इधर टेबल बनाएंगे तो यहाँ पे बीचों बीच। पहले टेबल बनाते हैं। अबे खाने पीने के टेबल दो ना, इलेक्ट्रिक टेबल नहीं। साइंटिफिक टेबल, कार्ड गेम टेबल। हाँ चलो कार्ड गेम टेबल। उसका भी साइज, ओ भाई साहब बड़ी छोटी। Good work. Shall we move on? हाँ, let's move on. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. Ah, the altering yeah. spell will allow you to customize any conjured item. Bhai, You kya can hai? change the colors, patterns, and styles of your ठीक है भाई, furniture बात to करो, suit मत your नहीं taste. आता। Let's get started, shall भाई we? Watch closely as I demonstrate how to इस लड़की को बोल perform के the समझाना altering पड़ेगा spell. कि भाई बता कैसे वो कर। लड़की को ज़्यादा आता है, ठीक है भाई यार, नहीं होता यार। चलो 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 चलो, वो आ रहा है पीछे से लाल लाल। ओके यार हाँ रुक जा ये लाल Any conjured item and perform the altering spell. ये कहाँ रख गया हम? ये कहाँ रख? ओ भाई साहब, और बड़ा कितना छोटा जा सकता है? टेबल के ऊपर रख सकते हैं। कोने में अच्छा है ये, कौन से कोने में अच्छा है यार? इस कोने में अच्छा है। कंट्रोल होल्ड। अल्टर द स्टाइल ऑफ एन आइटम, ठीक है। अबे कंजा नहीं करना, अल्टर कर ये स्टाइल करी।
इसी के साथ खेलता है अपन। वो भाई साहब दीवार कर रहा हूँ क्या भाई, दीवार को भी चेंज कर सकते। हाँ भाई कुछ ज्यादा साइड में नहीं रखा भाई, दीवारें चेंज हो रही है भाई, कुछ भी। हाँ लाल लगेंगे, अपन को लाल पसंद है। अबे इसको ही करना है क्या? इसका कलर चेंज कर देता है। Nicely done. Nicely now done. you're ready for something a little more advanced. और कितना एडवांस है? You और can क्या use the enter? altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. भाई ये चाहिए भाई, अरे है ही नहीं। Oh dear, Deke thinks didn't know Deke was near. अनलॉक्ड है क्या? सब कुछ अनलॉक। ये वाली अच्छी है वे, क्या सही फील दे रहा है। Deke cannot believe how many beasts you have here. थोड़ा वो रखेंगे अपन, क्या कहते हैं, लाल 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 रंग का भाई चीज। Deke hasn't फ्लोर seen भी this many plants here before. भाई प्रॉपर जादू भरा गेम है भाई, जो चेंज करना है करो ऐस तैस। Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Your space might benefit from a सब bit of लाल ambience, कर दिया। don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. अब क्या कर रहा है? Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? A cool moonlight ambience. I would like something natural. I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. चेयर से मैचिंग करना, अरे चेयर को चेंज कर देंगे भाई साहब, टाइमिंग बदल दी। नहीं नहीं नहीं, Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. हाँ भाई Now चेंज करो, you दिन have का learnt a करो। good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. कुछ भी चेंज हो रहा है भाई। No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. क्या एग्जिट? अबे ये क्या है अब? यार ये बड़ा हो जा रहा, रूम बड़ा हो। अरे बस कर, वो एक कमरा नहीं संभाल पा रहा मैं, और बड़ा हो गया। An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. हाँ ठीक है, एकदम वायरल यूज करेंगे। Wonderful. भैया Deke hasn't seen मूनलाइट this अच्छा है, बट many एक बार plants here before. I'd like to एक बार ask you change about करो। changing the room's ambience. Of course. I'd like... Oh, sounds perfect. हाँ ये अच्छा है, दिन वाला अच्छा है, क्योंकि मैंने पत्ते वत्ते लगाया ना, ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसमें। भाई साहब
Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. पोशन की तहस तहस कर रखा है मैंने और क्या भाई इस चेक को भी Cannot believe how many beasts you have here. इसकी भैंस की भाग सब कुछ ही चीज भाई मत करो भाई इतनी सारी चीजें चेंज करने को मत दो तो क्या सबको इसको चेंज करना है नहीं यार भाई मेरे को एग्जिट चाहिए भाई इस रूम से वो इसको भी चाहिए भाई एग्जिट दे दो ना यार ये क्या एक सेकंड इसकी भी है नहीं ये तो फ्लोर की है भाई चीजें बेचने जानी है मुझे हॉग्समीड में Does it get any more cozy than Hogsmeade? इसी घर में जाना है Come on in. Healing potions are a speciality here, should you need any. What can I do for you बाय today? नहीं भाई सेल Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. I hope to see you again. Farewell for now. ये स्लॉट में 11 गियर बचे हैं हाँ भाई रास्ता याद था नाइस I was hoping to see. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. I received a flurry of messages from Professor Black's house elf, Scrope. Scrope sent you messages? Yes. I thought it was odd too. He asked me to meet him and then told me to take the toast. Why would you want to take toast? To a cave under the lake. That's where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern.
I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Finally, main mission progress कर रहे हैं अपन. Time pass के बजाय. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. To think it was beneath us all this time. This looks promising. तो वाह. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. वो गलत मर्यादा लेंगे starting. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal, as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the Portkey, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind.
and we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. I don't think I have. Perhaps your young friend is not as well traveled as you think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. पक्का नहीं बताऊंगा प्रोफेसर पक्का पहला ट्रायल इधर है 3 ट्रायल होंगे टोटल ठीक है It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. एक दिन ऑफ स्ट्रीम बैठ के ये सब करूँगा मैं उड़ना अलाउ कर दो भाई कहाँ जाना है मैप देखते हैं भाई साहब बड़ी पास है यार ये तो वर्ल्ड मैप अबे शेष What the fuck? ठीक है बहुत बहुत पास जाना है ये तो अब यहाँ से टावर 3 दबाते हुए लेट्स गो हाँ भाई उड़ जा इजी ट्रैवल 6 मिनट की देख रही कि पहले वाली स्ट्रीम डिलीट कर देना 6 मिनट की दिख रही है जी यार शीश कर दूँगा भाई साहब क्या सही है वे फ्लैग करके जाओ कौन पैदल चले इतना कर दूँगा मैं डिलीट कर दूँगा थैंक यू बताने के लिए What are you up to now? तेरे क्या किसी का भी हूँ Over here. तो क्या मैसेज डिलीट कर दी क्या ये ऐसे डिलीट का गेम ना खेल मेरे साथ We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't the app already pass them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. मेरे को बीटी मंत्र में आया देखा कि मैंने पढ़ा था यार मैं सोच रहा हूँ ऐसी बात है They're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. I've never seen a sword like ठीक है तो लूमिनस है ये मैंने कर रखा है F2 में कर रखा है Quickly now. ठीक है चलो छुप गए Oh, I
I suppose we could charge right into their mist. गलती से गलत चैलेंज कर लिया मैंने। छुप जा छुप जा छुप जा। F दबाना था मैंने यार, गलत बटन दबा दिया। अबे हट तेरी। आ जा। अरे मैंने एक फाइटिंग का बनाया था पूरा, बट नहीं, उस रूम के अंदर बकचोदियां भेजा था। ये ठीक है। फिर अब चाहिए मुझको उड़ाने का भी तो चाहिए कुछ। नहीं यार, मैं क्या ही वेपन गैप कर चल दे। बोला था स्नीक करते हैं। ऐस तैस कर दी मैंने पूरे स्नीक की। पैसा मिला। चोरों से तो चोरी कर ही सकते हैं। बस जाना कितने है? Revelio. फायदे यार, एविडेंस ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे तो, क्योंकि क्यों आए थे? मैं तो सबको चाट और मार दिया, वरना फॉलो कर लेता। इसके अंदर भी कुछ नहीं है। खाना बनाने तो नहीं आए होंगे। इधर पक्का कुछ तो मिलेगा। Orders directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? ये तेरे पीछे चल रहा वो प्रोफेसर, हाँ प्रोफेसर फेक। बहुत डरा दिया। भाई लेवल आई थी यार, मकड़ियाँ। अबे गोल्डन वाले वो कैसे आ रहा है? पारोले। Levioso. Let's get this over. Accio. There you are. Incendio. Confringo. चल बे, इतने स्पेल की गया ना मैंने। Antagonistic towards wizard kind, but this is different. फिग है इसका नाम। FIG. Looks like we found the entrance. वाह! इतनी देर से तो दिख नहीं रही थी एंट्रेंस है। It's locked. भाई मुझको भी सिखा दे, ये वाला स्पेल सिखा दे प्लीज। An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. ठीक है, please, I want to learn it. Revelio. Someone was an avid reader. Can't say I'm familiar with many of these titles. एक चश्मे मिले जा रहे हैं, चश्मे चाहिए पैसा दो मुझे। I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Welcome to San Bakar's Tower. Revelio. Hey, Parzival. Hello, Professor. Did you say San Bakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. ये बंदा मर चुका है, फिर भी बात कर surmise, रहा है। based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower.
That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, यार be मैं careful. स्ट्रीम को बंद करने वाला था कि आज के लिए होगा व्हाट ये और इंटरेस्टिंग होए जा रहा है ओ भाई ये तो पार हो गया ये लेवल 3 to unlock A reservoir of ancient magic downstairs near the entry. ए क्या मैं इस चीज को यार और चीजें अनलॉक करनी पड़ेगी यार इतने सारे स्पेल आए जा रहे हैं मेरा दिमाग का दही हो चुका है वो गायब करने वाला स्पेल किधर था ये था और ट्राई करूँगा अच्छा अलाउड ही नहीं है वो तो कहीं करना कासल के बाद ठीक है ये भी सही है हंसले भाई तू हंसले अब मैं यहाँ से कूद जाऊँ तो कूदेगा ही नहीं बेशरम अरे क्या हो रहा है खुल्ला सिम सिम Revelio. फर्स्ट ट्रायल हेयर वी गो ऑफ स्ट्रीम सब अनलॉक करना ऑफ स्ट्रीम साइड क्वेस्ट अनलॉक करूंगा ऑन स्ट्रीम मेन क्वेस्ट इजी तभी तो इतना सब करके आया हुआ था पहले I've seen this before in Gringotts and the restricted section. ओ भाई Revelio. ये बता देखा है कभी मेरे को तो नहीं याद ओ नहीं हाँ ऐसी जगह देखी तो है चलते चलो अरे बच गया ज़्यादा नहीं चलना चाहिए अभी तो ठेलता भाई Impressive. That must have done something. Best have a look around. स्टाइलिश स्कूल क्लोक क्या स्टाइलिश है इसके अंदर अब होगी फाइट होगी क्या नहीं चोरी करेगा तेरा भाई परफेक्ट स्कूल यूनिफॉर्म अरे इतनी परफेक्ट है क्या 52 रुपये नहीं परफेक्ट स्कूल यूनिफॉर्म पहनेंगे अब तो कहाँ है परफेक्ट स्कूल यूनिफॉर्म कहाँ है इजी भाई चश्मे का क्या सीन है एरिना तो लग रहा है ना टेस्ट वेस्ट है अब देखते हैं हम पास कर पाते हैं कि नहीं भाई यहाँ से तो मैं उधर ही गया हूँ अब तो मसला है ना अपना कैरेक्टर अच्छा नहीं वैसे नहीं चो रहा हाँ भी तुम लोग ये लोग उठ के मारेंगे देखना ये लोग पक्का फॉर श्योर आ जाओ चालू करो All traces of ancient magic. Something must be different.
Revelio. जाना किधर है, कैसे है, क्यों है? नहीं कहना तो चेस्ट करूँगा। 29 रुपए मिले। भाई तोड़ दी, गलती से तोड़ दिया भाई, गलती से तोड़ दिया। अरे हट। Repair. तो रिपेयर भी नहीं हो रहा है तो तोड़ना ही है क्या? ये भी सही है। Reparo. नहीं हो रहे, टूट भी रहे हैं। अबे तोड़ते ये खुल गया क्या? पहले ही नहीं था ना? भाई ये क्या गेम है? Revelio. पहले तो यहाँ रखो, रिस्क रखूँगा यार, मारूंगा तो। एक रखता है इनके जिंदा हुआ तो मजा आएगा। These are never a welcome sight. At least I know what to ये expect पहले this ही time. मार दो क्या है? हाँ बे ये चाटा। ये देखना इसको, ये सबसे ज्यादा पावरफुल है और एक बार में है। अबे और भी आ गए। Protego. Stupefy. Lumos. Levioso. Stupefy. Accio. Confringo. Incendio. भाई सही तोड़ दिए थे क्या? चल वो राइट साइड भी खुल गया। What have the keepers planned for me? ये तक डरावना कहता है। These look familiar. Accio. चलो क्या ना खाया वैसे? नाइस थैंक यू भाई। अरे पॉटर बोल ट्रायल कोई सेंस बना पा रहा है? चीजें दे रहा है तो गिफ्ट। अच्छा मेरे को जाना है उस साइड, बट मैं अगर यहाँ से जाऊँगा तो मैं कहीं और टेलीपोर्ट हो जाऊँगा, तो मैं ऐसे ये साइड से इतनी जगह ऐसे नहीं जा सकता भाई। क्या बखैर चीटिंग है भाई। ओ सामान मिला सामान करेंगे सामान footage के। What did that burst of magic do? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. More statues. आओ तुम्हारी भी मारे। Levioso. Confringo. Incendio. बच गया, नहीं पड़ गया मेरे पड़ गया।
ये भी मेरा ये माना मीटर खींच रहे हैं भाई। It's easy on me. भाई मैं देखा गायब होना तो नॉर्मल सी चीज है, बट वो भी नहीं है। Revelio. तो चुराने लायक है। Accio. नहीं क्या नहीं भाई, अब ये क्या हुआ? अच्छा ठीक है ठीक है, तो तेरे को ही लेके जाना है मुझे। बट कैसे? यहाँ गया ये रुक। Accio. Seems I ought to explore this archway from both sides. What should you do? मैं नीचे आ की भैंस की, अब मैं ऊपर कैसे जाऊं? मैं तो नीचे आ जाना प्लीज। What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. ये क्या चीज है? ओ अच्छा, ये रास्ता बंद हो गया। अब तो करूं क्या? अरे ये भी बंद हो गया। फक, उस साइड भी तो एक है, ये नहीं है रे। Revelio. उस साइड का है ऐसी है। Accio. उस साइड वो दीवार के अंदर है, वो बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, ये अपन ने जादू किया। ये अपन इस साइड आया, इसको बाहर खींचेंगे, खींचेगा ही नहीं क्योंकि है ही अंदर। आ जाना भाई, इधर आ जाना भाई, प्लीज नीचे होके आ जाना। कहाँ है बता? इस साइड। Confringo. Leviosa. लेवियोसा से नीचे हो जाएगा क्या वापस? ये डोर फ्रेम कर क्या रहा है? होली शिट, मेरे को इसके ऊपर से इधर कूदना है। अरे ते आजा भाई, आजा आजा आजा। तो इधर से गायब हो गए। ये क्या बकला है? अरे यार, वो लगता है शायद हुई मिस्ट्री सोल्व। देखते हैं। जादू है, कुछ तो कर लोगे यार। ठीक है,
चलो चेस्ट तो मिली अपने को, इतना तो क्या बनना। अब अरे अब तो इजी है, हो गया भाई। क्या यार इसके लिए इतना ट्रायड बस। ये देखो अब मैं वापस अपने नॉर्मल उसमें जाऊंगा। अरे फक, क्यों जाना है, यूं जाऊंगा। हो गया, ऊपर चढ़ा, वो उधर हो गया इस बार। आजा बेटे आजा वापस। भाई देखा अक्कल ऐसे थोड़ी ना जादूगर बनाऊं। योर स्लॉट्स आर फुल। इसकी भैंस की स्लॉट से फुल होते रहते। कुछ कचरा मिल जाएगा फिर से। 32 ये तो कर रहा है डिक्रीज। करो डिस्ट्रॉय, तुम भी कर रहे हो डिक्रीज, करो डिस्ट्रॉय। इनको पैसे मिलते हैं बेचने से, बट अब क्या करें, अभी तो बेच नहीं सकते। अभी क्या दे रहा है कोई भी घटिया सी चीज। अब कहाँ है अपन? अरे तू पैलेट दबाओ। थोड़ी डर लगेगा। Stupefy. Leviosa. Accio. Incendio. Confringo. मेरे पास ये भी तो है। ये छड़ी गायब कर देगा। ठीक है, बाकी सब तो कुछ है ही नहीं। बाकी तो वही Expelliarmus. अरे यार मैं बटन बना Confringo. बड़े वाले को ये 5 Leviosa. Accio. Protego. Stupefy. हवा में ओ Stupefy. ऐसे कैसे? अबे अपन आया किधर से? इधर जाना किधर है? कर क्या रहे हैं? उधर से आते इधर जाना होगा। जादूगर ओपी कर ले भाई, इन्वेस्टिगेट कर ले। ओके थोड़ा ताकि हम आप पे आ सकें। साइड वाले किस काम के थे? Now to see what's changed on each side of this archway. भाई आज ही खत्म कर दोगे क्या? कल के लिए भी? अरे बहुत बड़ा है, अभी तो कुछ भी पार नहीं हुआ यार। ये वाला ख़त्म करना चाह रहा हूँ, ये जो अभी चल रहा है। कोई एक मिशन लग गया इम्पोर्टेंट सा, चाहता नहीं कि इसके वो। भाई पोशन पे पोशन दिए जा रहे हैं। फाइट होगी क्या बहुत गंदी वाली? भग भैंस की, भग 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 भग। आई ये आ जाओ, आ जा आ जा। Don't like the look of this. Protego.
ओ हाँ, इससे तो डॉज कर ही नहीं सकते कैच थ्रो। बड़े वालों का भाई कतई तबाही मचा रहे बे। ये चल बेटी। अरे मैं एनिमेशन में था ना। मारो कैसे मारो कैसे मारो कैसे एनिमेशन में था। इन्हीं का वेपन इन्हीं पे बड़ा एरिया। हाँ ना। अरे भैया भैया माफ कर दो भैया माफ कर दो, मैं गलती से मजाक कर रहा था। ये क्या अबे इससे बचना। मैं तो डेड हूँ लगभग। भाई चीट से कैसे बचते हैं? अबे क्या चीज ने टच किया मुझे? यार ये मेरा भागने के लिए तो आधी पावर यूज कर लेता मेरा कैरेक्टर। और फाइट के लिए 1 2 3 यार मस्कान क्या है क्या कुछ ऐसा नहीं। भाई और स्पेल सीख लेने चाहिए थे मेरे को। कोई वीक पॉइंट होगा ना, बहुत करना अभी तो लैंड किया था। रुक वेट वीक पॉइंट नहीं, ये वाइट कलर कर लेना है मेरे को। और इसीलिए इतने सारे वो दिए थे मेरे को पोशन। अब तो डेड होने वाला है। आप तो डेड हो गए थोड़े में। अरे जल्दी भर जा बाहर भाई।
और तो यार बच गया इस बार। एक्स पार्ट से What a relief. बीजीएमआई में कौन है पारा? अरे वो मिट्टी वाला। शिट यार बेशर्मो। ओ भाई साहब ये तो लिजिट भाई, ये टकला है बस इसको टकला कर दूं, बोल नहीं लग रहा। हैरी पॉटर सेकंड मूवी में जब वो जाता है चेंबर ऑफ सीक्रेट्स अंदर, वो चुराने गया आसपास नहीं। हाँ ना, क्या बोला तू उसे ना, मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा भाई। और रोया। आप देखेंगे इसकी मेमोरी। हाँ दिखाओ भैया, दिखाओ। अबे चश्मा चेंज करना याद दिलाना है, क्या कचरा चश्मा है। डुबकी मारते हुए। हाँ ये लड़की भी अपनी तरह एंशिएंट मैजिक देख सकती थी, तो इसने सोचा कि हम इसको सिखाते हैं। अब ये सिखा रहा है, पता नहीं आगे की स्टोरी क्या है। Transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. ये लड़की ने कुछ गलत किया, फिर इसने सील कर दिया सारा। It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. एक तरीके से लाइक रहता तो कहते ने छुपा दिया है सारा मैजिक, बट है ना कोई लोग हैं जो अभी वो अक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे अच्छा हम अक्वायर कर लेते हैं, किसी और के हाथ में लगे उससे अच्छा। बात ऐसी चल रही है। Every year a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor I Redwood? was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. भाई क्या मजेदार स्टोरी हो भाई साहब दो का। Another memory. Now to find a way out of here. Revelio. कुछ चुराने को नहीं है क्या इस कमरे में? भाई गलत स्टोर हो रखा हूँ। Leviosa. फटेगा। ओ फटा भाई, फटता तो है। मैं क्या इसको मैं वापस ठीक कर सकता हूँ? Reparo. ये चलो ठीक है, तबाही नहीं मचाएंगे हम। Revelio. शायद क्या कुछ नहीं। चलो तो फिर एस्केप करते हैं। ओ ये अच्छा ये मैंने चुराई नहीं। More crystallized stone. That must be the way back.
अब जल्दी बोल क्या सीन है? What have we here? हाँ ये दूसरा वाला भी आ गया finally. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the port key to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You'll need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. Hey, look, dead hai. But still ऐसे एकदम बातें कर The रहे हैं student जैसे. has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. अबे रोक ही दिया उसने ट्रैक. पहले वाला कह रहा है कि जल्दी जल्दी कर लो और दूसरा वाला कह रहा है अरे रुकते हैं भाई. भाई. Now then. अरे हैरी पॉटर में वो Professor, फोटोज में the name लेते. Rookwood. हाँ. Do you think that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ramrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. अब मेरे को वापस हैरी पॉटर देखनी होगी. हाँ लेकिन टाइम पर तो आ गया था ना वो टेम्पररी. देखो देखो. Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. तो basically चीजें मिलेगी आपको उठाने और आप अपग्रेड कर लो खुद को. हाय हाय समर टाइम. भाई क्या प्यारा लग रहा है ना. एक क्या गेम बना दिया है भाई. पूरी हैरी पॉटर सीरीज ऐसे इतनी बाप लगती है कि हमारे. हाँ भाई. Come see me, I have discovered something. भाई इतने सारे मेल हैं, इतने सारे लोग क्या क्या सिखाना चाहते हैं क्वेस्ट में तो भर. ये सारे करेंगे, ये वाली बाद में करेंगे. गाइस सो आज के लिए इतना ही. ठीक है, हम मिलते हैं कल दूसरी स्ट्रीम के साथ. तब तक के लिए ओपन लगाना तो सिखा दो. ये क्या. हाँ ये मकड़ियाँ मारने पे मिल रहा है और तुम चाहते हो मैं और मकड़ियाँ मारूं ताकि और यहाँ तक अनलॉक करूं. भाई मैं नहीं जा रहा हूँ जंगल में वापस. पागल समझाए क्या भाई. वो मकड़ियाँ दिमाग खराब कर दी यार, रुला दी. इसमें लगा सकता हूँ क्या? इसमें तो पहले से लगा. इसमें लगा सकता हूँ क्या? अबे अप्लाई करने का तो आ ही नहीं रहा है. ठीक है, चश्मा कहाँ है?
हाँ इसकी अपीयरेंस चेंज कर देना चश्मे की, ऐसा देखना चाहिए। ओए चश्मे के बजाय ये कर दूं। ये फुल हेल वर्ल्ड इमोट। व्हाट्स अप। नहीं तो ये चाहिए। ये भी गजब है भाई। माइनस हो रहा है, इससे प्लस हो रहा है, ये रखेंगे। भाई कहाँ गया ये वाला? अच्छा है क्या स्लिदरिन? या ये वाइट वाला भी अच्छा है, इससे मेरी अंदर की ड्रेस। हाँ यही सही है। केप सही है या ये डार्क वाली अच्छी है? बताओ, दोनों में से अच्छी बताओ। या तो ये केप या ये डार्क आर्ट्स रोब, बताओ भाई। क्या क्या ही बना रहा है तू? तेरा हाउस क्या है? मेरा स्लिदरिन बोल। तेज स्पाइडर लेवल को डाल सिंह रहने दो यार। तो हैरी पॉटर पर बेस्ड है गेम ब्रो? नहीं, हैरी पॉटर पे बेस्ड नहीं है, हॉगवर्ट्स पे बेस्ड है। इसके थंबनेल बना रहे। इसका किस चीज का थंबनेल क्या था वो, मैं भूल गया। तेरा हाउस क्या है वापस दिखा, वो चूज करने को दिया। नहीं वैसे तो ने कह दिया था आपका हाउस वही रेवेनक्लॉ, बट मैं बस बोला ही था कि हैरी पॉटर में भी हैरी बोलता है कहना आप अगर आप मन से चाहोगे ना दूसरा हाउस ज्वाइन करना तो आप दूसरा कर सकते हो। तो गेम ने भी यही कहा कि अगर आपको दूसरा हाउस लेना है तो ले लो। वो समर वाला व्यू का, ओ हाँ बहुत अच्छा था वो रूम। देख एक तो ये ऐसे मस्त सुपरमैन बन के अब अपनी परफेक्ट स्कूल ड्रेस दिखाऊं, या फिर ये ऐसे पहन लो और ये देख भाई मस्त गोल्ड मोड वाली फीलिंग लो। और भी रोब्स हैं अच्छी अच्छी। तो इसकी अपीयरेंस के नाम पे कुछ अच्छा नहीं है क्या? ये कैप सूट नहीं कर रही। विच कैप लग रही है? लगा रखी ये रोब ठीक है। तो कैप का क्या भाई, वो क्या कैसी छोटी सी हुई। हाँ ठीक है यार, कैप के अपीयरेंस चेंज कर लेते हैं। एक सेकंड दे रहा, एक सेकंड। ये कैरेक्टर कस्टमाइजेशन तो है। और चेहरा दिखेगा ही नहीं किसी को, बाहर में जाए सब। ये क्या है? ये क्या है? ठीक है, ये तो मैचिंग की है। पिजड़ा बना रहे हो तुम यार, ठीक है यार। हाथ 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 ये डेडली लग रहे हैं वे। हाँ ये नहीं भाई, ज्यादा डार्क हो गया। कहाँ गया हाथ? ये मुक्के वाले हैं। हम लोग अभी रोब ठीक है। अंदर की ड्रेस फिर यही रखेंगे, अंदर अलग अलग टाइप के ड्रेस। बीथिंग है जी, नहाने के कपड़े भी हैं गेम में। ये मैंने पहना हुआ क्या है? सेकंड नंबर वाला ना, सबसे हाईएस्ट वही है। अरे यार अनइक्विप कैसे करते हैं? हुड भी लगा सकते हैं हम। इसको अनइक्विप कैसे करूं भाई? नहीं पहनना मुझे, बाहर में जा। ये समर टाइम, ऐसे भी घूम तो सकते हैं। ये क्या बीडिंग सूट है भाग? स्मार्ट लग रहा है। So that's it for today's stream. मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।